So good morning and welcome to this session. Thank you so much for having me here, and I really apologize for this delay. In Delhi, a lot of things, I don't want to give an excuse, but there are certain things which are not in your control a lot of times. But I would again, since this is pertaining to your personality development, I would caution you here, because you are aspiring corporate managers, CEOs, managing directors, and the like, right? So what I am going to caution you on is basically take into account all the uncertainties, because uncertainties are uncertainties. But we still need to keep cushion for various things that may happen. What happened today should not happen with you. Because if you start in your careers and if this happens, this is a kind of a common thing, कि भाई ऐसा हो गया इसलिए नहीं पहुंच पाए, वैसा हो गया इसलिए नहीं पहुंच पाए. So it is not going to show very good on your CV and your performance, right? So I will again apologize. Thank you for bearing, sitting here for half an hour and waiting. It is the learner. Now, why we are here, right? Because it is the learner who inherits the future, right? You agree? It is the learner who inherits the future, while the learned, the person who has learned it all, while the learned lives in a world that no longer exists. Think about it. It is the learner who inherits the future, while the learned lives in a world that no longer exists, says Eric Hofer. I am a very big fan of Eric Hofer. Anybody? Because this is in a workshop mode, so we will also be talking to each other, interacting, and you will also be participating in this session, right? Do you agree? Would you like to do that? Would you like to do that? So why does Eric Hofer say this? He says it is the learner who inherits the future, while the learned lives in a world that no longer exists. बहुत बच्चे, बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना, हाँ मुझे आता है, मुझे सब आता है, मैंने पढ़ लिया, मैंने देख लिया. What does it mean? Thank you, madam. Thank you so much. I will keep it here. इस पे रख लूँ? Please. तो जो लोग ये बात कहते हैं, तो वो आपको क्या लगता है? What do you think about such people? Have you ever said this? We have all said it sometime, right? But it is something very, it's a very big no-no, right? Why? I'll tell you why. There is अगर उसको भी मैं आपको एक बड़ी अच्छी उससे बताती हूँ. चाइनीज़ आजकल हम बड़े खुश नहीं होते हैं चाइनीज़ से और चाइनीज़ वर्ड से और चाइनीज़ चीज़ों से, और होना भी नहीं चाहिए. वो देखो अब हमारे तवांग में उन्होंने yesterday see the news. But Chinese is a language of symbols. हर एक वर्ड के उनके सिंबल होते हैं. Now the word change has two symbols, right? The first symbol denotes. Anybody? Yes, ma'am. You were saying something. They have different symbols for different words. So this word change, madam, has two symbols. The first symbol denotes opportunity, and the second symbol for change denotes threat, danger. What does it mean? Does it ring a bell? Does it mean yes, ma'am? You saying yes? When we change something about us, we are achieving an opportunity, but there's many things that can happen when we are changing, when we are going for that opportunity. So it denotes danger too. It is very risky. Very good.
Betty ma'am, very good. Can we clap for her? When you clap, again this is a personality development simple thing, right? When we clap, clap the heart out. Why? Because put your hands together and really clap. All your, what are your, क्या है यहाँ पे? सारे बॉडी के जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं आपके, उसके प्रेशर पॉइंट्स हैं यहाँ पे. तो ये हम एक्चुअली अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन जब हम हार्ट आउट करके और क्लैप करते हैं तो लगता है दूसरों के लिए भी तो हम कर रहे हैं. So we're making them happy also, we're motivating them. So it's a wonderful win-win. So would you like to clap now? Thank you. Thank you so much. What's your name? Manyata. Manyata. Excellent. So this Manyata, this symbol of opportunity and danger. At the same time, for the word, as you rightly said, for the word change is the dynamism and the volatility in the environment which we see every day in everything. Do you agree with that? हर चीज change हो रही है ना, तो dynamic है, तो volatile है. आपका iPhone कैसे change हो जाता है? उसकी लाइफ साइकिल कितनी छोटी होगी, जो भी आप फोन यूज करते हो, ठीक है ना? तो आप, और इसी तरह से हर चीज में इतना ज्यादा डायनामिज्म है, तो इसलिए ये एरिक होफर की बात और भी सत्य हो जाती है. So in times of change, it is the learner who inherits the future. That means I see every change as an opportunity and try to see the brighter side of it, work on it, cash on it, do my best. I can do it. Do you have that auto-suggestion? Do you say that auto-suggestion to yourself? करते हो? Yes, I can do it. I can. Believe me, this is actually who you are. Because you are capable of everything in this world. Everything in this world. So let not anybody, anything, or any situation put you down. Why? Because every situation, because situation change होती है ना, तभी तो situation, नई situation आ जाती है, change हो रहा है ना? तो उसमें हम क्या बेहतर है, what is that half glass full? I don't want to, I'm not a political person, but I like what Modi ji said. Half glass full with water and the rest half glass full with air. That's great, isn't it? That's really a great, every time if I am communicating this to myself and to the environment around me, you don't have to speak out in so many words. You have to be it, live it, believe it, dream it. Are you with me? No? कोई कह रहा no ma'am. You want to come here and stand here? Come. Please say I'm not with you. Come. You want to? Okay. आ जाओ. All yours. No, I am not with you. The voice was not loud enough. There was no conviction in the voice. Wow. What should I do to be convincing to you? Be loud, have power in your voice. Whoa! Clap for him. This is a great feedback. So now every person, every moment, now what happens is, no, I'm fine ma'am, don't worry. That was a great feedback.
That was a great feedback. ईशान, एक चीज ये भी होती है, एक चीज मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस होती है, ठीक है? तुम्हें पीछे सुनाई दे रहा है कि नहीं सबको? ओके, अगर जब नहीं सुनाई दे तो ईशान की तरह आपको बताना है, ठीक है? बिकॉज आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फीडबैक एंड ऑब्जेक्टिव फीडबैक इज द बेस्ट फीडबैक टू इम्प्रूव योरसेल्फ. क्या कहते हैं? निंदक नियरे राखिए. आगे की लाइन मुझे नहीं आती, लेकिन ये लाइन मैं पकड़ के रखती हूँ. ये लाइन मैं हमेशा पकड़ के रखती हूँ. मैं बच्चों से वर्कशॉप में हमेशा कहती हूँ, जो सीखा वो लिखो, जो अप्लाई करोगे वो लिखो, उसके साथ ये भी लिखो व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड. बिकॉज आई एम अ लर्नर एंड व्हाट ईशान सेड, आई एम गोइंग टू कीप इट विद मी. आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट. थैंक यू ईशान. You are welcome. All the best. But I don't want to be loud. Be gently loud. Sorry? Be gently loud. I am generally loud, but I am gently because I like to have a modulation in my voice, and that is actually because that helps you to be more. I think we've lost you. So should we end the session here? If you want, I can end the session here. No, if you want to have a good time, please have a good time. I don't mind. We can start when you want. Okay, ma'am, I don't want you to take any action against him because that was a great feedback and I respect that feedback. Thank you. Good action will be definitely welcome. Okay. So where were we? We were at the Chinese. तो वो कौन सी चीज है आप लर्निंग यहाँ से जो आपने निकाली after these two things, Eric Hofer and this Chinese symbol? What is that one thing which you will try to adopt and display while you are even while at college? But more importantly, when you are an unknown, a new environment, that is your corporate environment. What is that one thing which actually, yes? We should never stop learning, and we should always be a learner and open to everything that people have to say about you and improve. Wow, excellent. What's your name? Jasleen. So Jasleen says 3 things. One is we should always learn, and we should always be open to everything that everybody has to say, and we should always improve on that, and we should never think that we know everything. We should always be a learner. excellent. Now one very important thing also which comes out from this for me is be a problem solver. Be a problem solver, a solution provider, not a troublemaker. क्यों? जब हम किसी भी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो क्या होगा? तो हम उसकी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, है ना? सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम उसको पॉजिटिव कोशिश कर रहे हैं और इसलिए उसमें हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं. सो ऑलवेज बी अ ऑप्टिमिस्ट विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड लुक फॉर सॉल्यूशन. कैन यू डू दैट? How many of you do you think can you do that? Yes. And you know one very good body language here. अगर हमें किसी भी बात में I am convinced. Thank you. If I am convinced, if I want to say yes, then I should say yes. I mean I am saying yes. Is it yes? Is it really yes? So these are some very important pointers which you can keep in your kitty and actually be a personality which you really. Now I would like you to write down one thing. What I want you to write down is
how do you want, देखो मैं तो तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ, आंसर तुम्हें लिखना है. How do you want others to view you? Are you with me? Just to, I'm not putting words in your mouth. You have to write down in one line, how do you want others to view you? Then we'll share, somebody will share, then we will actually align it with what I have in mind for you. Yeah. I want others to view me as a strong personality with confidence, kindness, good heart and an amazing soul. That's a wonderful statement for yourself. And what is this? Jasleen, Yes. what is this? What you have written down for yourself? What is it? Personality. Personality. No. Personality is a very big word. Very heavy, very deep. So, what exactly is this? Yes? Sorry? Okay, great. But what is this? What are you, would you like to achieve this? Yes. Would you like to achieve this? If you want to achieve this, then what is this? Qualities. Goal! Excellent. Clap for yourself. So you just set a goal for yourself, didn't you? How many of you have done it? Very good. You don't want to share? I have a doubt that it's important how we see us or how I see us in my mirror, or it's important for us to see us like we are confident, we are amazing. I think it's important कि हम अपने को कैसे देखते हैं, ये नहीं कि सामने वाला कैसे देखता है, क्योंकि सामने वाला नेगेटिव भी देखता है, पर हमें तो पॉजिटिव रहना है, तो we have positive mind test. If you can think it, you can achieve it. Precisely, that's what she did, and that's what that was the problem was given to you. How do you want others to view you as? I think that's a very simple, understandable statement, and that is precisely which is on the, because everybody wants to be viewed as positive. So why I gave you this problem statement was, how would you like to be viewed by others as? Right? You got it? Good. Now there is, so उसमें जोहारी विंडो बहुत अप्लाई होती है यहाँ पे. आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं? So lot of you must have read Johari window, or you will read Johari window. The third window is very critical. We will not get into that because otherwise the session कहाँ चला जाएगा. We will not get into that. Offline, yes, we can discuss if I am here, or we can do it, online. आप अपने faculty से नहीं तो आप अपना खुद Google करिए. Why am I saying Johari window? Google out. Third window is most pertinent. Third window is, I don't know, but the people know. First window is, I know, others know. My name is Anjali, I know, everybody knows. Second window is, I'm not, sometimes I'm not very patient. So I know, but I don't want the others to know. So I don't show it in public. So that is the second window. What I know and others don't know, right? The third window is, what will be the third window? Others know, I don't know. You see this? The fourth window is nobody knows. वो psychometric testing से निकालते हैं आपका that part of your personality, right? Now, third window becomes most critical because मैंने अपने आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैंने ऐसी घड़ी देखी, तो आप क्या बोलोगे? Impatient. और क्या बोलोगे? Distracted. Not a good behavior. और
क्या बोलोगे? कुछ और जल्दी काम है इनको तो इंटरेस्ट नहीं है इस इंटरव्यू में, जाने दो. Right? So you will say, okay, please, your interviews, we've taken your interview, you can leave. मैं बचपन से जब मेरे पापा ने मुझे घड़ी दी थी 5वीं क्लास में, तब मुझे बड़ा मजा आता था घड़ी देखने में, तो मेरी आदत पड़ गई. So you see the body language leakages. These are called body language leakages. So what is my goal? My goal is to qualify in the interview and get that job. But the communication which I sent out, your topic for today is communication and goal setting. It has to be the other way around, goal setting and communication. Because the communication follows based on what your goal is. If your goal here is to learn today in this session, then what would you do? What would be your communication? Finding faults with the faculty? No. Feedback, very good. But what should be your communication if you are actually here for learning? Bolo. What is communication to you? What means communication? What communication means to you? We see your thoughts, interact with other people. Oh, good. Interact, exchange of thoughts. What else? Yes, sir. Expressing ourselves. Expressing, very good. Yes, sir, at the back. Listening, understanding. Excellent. Clap for it. What is your name, sir? Priyansh. Thanks, Priyansh. बोलना तो सबका, हम समझते हैं हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बस बोलते रहो. सुनता कौन है? 94% of your message is understood by non-verbal communication. And non-verbal is without words. Verbal communication is even less than 6%. Verbal is when you use words. It can be by writing, it can be by speaking, it can be by your WhatsApp, whatever. Are you with me? Yes. So you're not communicating. You're just exchanging. Keep exchanging. Who's listening? He is listening. He is understanding. You listen, you understand, you perceive, you create an experience here, and then you use it for your benefit and others' benefit. So when I said, if you are a learner, that is your goal for today, for this 1 hour, next 1 hour. What is the communication you should give? Ab soch ke bolo. Yes, at the back. हाँ बताओ. Yes, bolo. Have a good? Have a good? मैम दे दीजिए, सुनाइए, मेरे काम खराब है थोड़े. Have a good what? Body one. Body what? Posture. Very good. Excellent. See what he means. What is your name, sir? What is your name? Good. Thank you. Okay. देखो posture से फर्क देखो. मजे करो लेकिन सुन भी लो. Posture से फर्क देखो तुम. हाँ. Now चेयर नहीं है यहाँ पे, नहीं मैं आपको अभी बैठ के दिखाती. एक चेयर दे दीजिए सर. जुड़ी हुई है. सॉरी सर, ये वाली निकलेगी. अच्छा. And what I don't do, what I say, what I don't say, what I live, what I don't live. Because communication is everything which I do and I don't do. When you are sleeping in this class, when I'm taking this session, I think your goal is learning, and you just doze off. You said, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ. उठो, बाहर निकलो, बैठो. आपको तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं. आपकी बॉडी मुझे क्या कम्युनिकेट कर रही है? Are you communicating? Yes. Every second, every breath we take
communicate, we are communicating something to the world. So that is communication, and that is as heavy as it can get. It is as vast as it can get. It is as deep as it can get. Are you understanding? What else? What else? Also, if you are a learner here, what other communication will you give me out? Give it out. How else will you like to communicate? He said posture. What else? Expressions. Yes, wonderful. What is your name? Karthik. Excellent, Karthik. Yes. Eye contact. Positive attitude. Positive attitude, that learning expression, that learner's expression, that brightness, that alertness, that awe. Hurry, मुझे सीखना है. If you are that, when you are in your college, in your class, in your corporate job, how do others perceive you, sir? How will others perceive you? Bolo? Learner and body language, ma'am. What else? Confident. Yes, because and be confident to state that you're not supposed to know everything in this world. Positive aura. Positive. Aura. Aura. What is positive aura? Very good. What is that? Positive environment. Positive environment. Yes, like environment तो बहुत बड़ा होता है. What is your positive aura? What do you mean by your positive aura? Excellent point. What is that? And how do you display that? Yes, sir. 1 minute. Yeah. Positive aura, interacting with each other with positive effect. And कभी-कभी हम बिना बोले भी वो positive aura कर सकते हैं ना? I can exude that. The way a person feel around me. Yes. आपका नाम क्या बेटा? Nishan. Nishan. Good. Thank you. हम कहते हैं clap for Nishan, but you are actually clapping for your heart. You were saying something. Thank you. That is great. So aura में बेटा सब कुछ आ गया. हम जो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, so the whole value system is what is a value system? Personality development की हम बात तो करते हैं, but होता क्या है personality? मुझे कई बार बड़ा वो होता है क्योंकि बच्चों को हम सही चीज नहीं बता. Personality development is every damn nuance that you have, every gene which you have from the womb. Personality development is two aspects. One is which you get, right? Your genetic transfers, and second is the environment that shapes your perspective. Every nuance is your personality depiction. You're portraying your personality, right? So आपने ये बहुत बढ़िया पॉइंट बोला, पॉजिटिव ऑरा. तो हर कुछ हमारे वैल्यू, जैसा भी वैल्यू सिस्टम होगा, वैसे ही थॉट्स आएंगे, वैसे ही वर्ड्स निकलेंगे, वैसे ही एक्शंस होंगे. वो क्या बोलते हैं मैम? एक वो है ना, कर्मणा वाचा, क्या बोलते हैं? मनसा वाचा कर्मणा. तो जो सोचा मनसा, जो सोचे वो बोले वो करे. ऐसी पर्सनालिटी हो तो वाह वाह. क्या होगा इससे? ऐसी पर्सनालिटी से क्या होगा? What will be the outcome of this personality? लोग क्या? What is that others are perceiving you as? Inspiration. Why? Why are you an inspiration? Yes. आप trust
ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो सर। जो सोचते हो, जो बोलते हो, वो करते हो। ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट ऐसे ही तो बिल्ड किया जाता है। और ट्रस्ट एक दिन में तो कहते नहीं बिल्ड होता भाई, क्यों? क्योंकि इन चीजों में अब समझे ना। तो अगर ऐसी पर्सनालिटी, वाह वाह वाह, सो गोल क्या है मेरा? Everybody should perceive me as inspirational, confident, with a positive aura, strong learning quotient. Right? So what do I communicate? That, so आप ऐसा करो, ये जो आपने आज अपना स्टेटमेंट बना लिया, गोल स्टेटमेंट बन गया। ये गोल स्टेटमेंट है बेटा, ये लाइफ लॉन्ग गोल स्टेटमेंट है आपका। आप इसको फिर से रिविजिट करना, रोज करो, हो सकता है कुछ मॉडिफाई भी करो आप। So keep visiting, revisiting again and again and again and again, because the times are changing. So much dynamism is there. So your goal will also be, somewhat dynamic. But as a person, as a human being, if you want to be seen as a person, as a human being, as Atman, because you have to be that. वो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बट आपको सब पता है। वो आप, you are more intelligent than us. हमारे एज, आपके एज में हम इतने शायद समझदार नहीं होते थे जितने आप हैं। तो I always give credit to this generation of being so intellectually vibrant, being so thought-provoked generation. Compassion, आपके में compassion बहुत है। आप ऊंच नीच में आपको बहुत गुस्सा आती है। घर में मैंने देखा है, जब जो मम्मी कहेंगी ना ये कप भाई का अलग है, तो बच्चे गुस्सा होते हैं, क्यों भाई का कप अलग? So the communication which this generation is sending out to the world is, you're a very compassionate, empathetic generation. Keep that. Hold to that. Create your पॉजिटिव को और इनहेंस कर सकते हो। Because who are we? What does Stephen Covey or Deepak Chopra or anybody says? We are not just a physical body. Or what will they say? उपनिषद क्या कहता है? हमारे 5 कोश। क्या कोश होते हैं बेटा? Anybody knows? पहला तो ये फिजिकल बॉडी, इसको कहते हैं अन्नमय कोश। ठीक है, अन्नमय कोश, क्योंकि अन्न खाते हैं, इससे वो नर्चर करते हैं। दूसरा जो होता है वो प्राणमय कोश, जो एयर शीट इसमें चल रही है, ठीक है, जो हमारे को जिंदा रखता है। थर्ड इज योर मनोमय कोश, मन, चित्त। फोर्थ इज योर विज्ञानमय कोश, योर इंटेलेक्ट। एंड फिफ्थ इज योर आनंदमय कोश, your spirit, your Atman, your true self. That is really who you are. Are you with me? So क्या होता है कि हम आजकल ये गूगल वगैरह अगर आप देखिए, कंपनीज किस तरह की एनवायरमेंट्स क्रिएट कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हैं? वो आपको जैसा चाहिए वैसा ऑफिस दे देते हैं। जैसा चाहिए आपको डॉग लेके आना है, डॉग ले आओ। आपको बच्चे को लाके वहाँ पे रखना है ऑफिस में, आप उसको भी ले आओ। आपको वहाँ प्रेयर करनी है, आप प्रेयर भी कर लो। आपको जो खाना है, क्यों कर रहे हैं वो? Can somebody guess why are they doing that? Motivated. Excellent. So how are you getting motivated? Is this some way connected to this in the holistic personality? As I said, the 5 koshas, that is your holistic personality. क्या कर रहे हो? गूगल क्या कर रहा है? वो तुम्हारे होलिस्टिक पर्सनालिटी को नर्चर कर रहा है कि तुम कभी जाओ ही नहीं, सोच ही नहीं सकते। वो सब जो तुम्हारी अन्नमय कोश मांगती है वो दे रहा है, जो तुम्हारी प्राणमय कोश मांग रही है वो बाहर बड़े बड़े just go out and तुम्हारी मनोमय कोश, तुम्हें मन लगा है घर पे बच्चा है उसको भी ले आओ भाई, अरे डॉग अकेला है उसको भी ले आओ भाई,
तो मन आ गया ना जगह पे। और विज्ञान में कुछ स्टडी। That's so very thoughtful of you. कुछ मैं ज़्यादा चिल्ला रही हूँ ना, हैं? उसने मुझे बोल दिया तो मैं ज़्यादा चिल्ला रही हूँ। Is it okay now? Is everybody able to hear me? Yes, ma'am. So what we will do is we'll keep some time for your questions, but yes, of course, we will have a little more discussion. So Google जैसी कंपनीज जो हैं उन्होंने बहुत रिसर्च करके ये निकाला कि भाई हर इंसान को क्या चाहिए। तो उन्होंने तुम्हारे हर कोश को नर्चर करने के लिए एक तरीके बहुत अच्छे इजाद कर, तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। अब एक कंपनी, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रही हूँ सर, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी कंपनी है। अब मैं तुमको उसका नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज जो कंसल्टिंग जब हम देते हैं तो मोर ऑफ कॉन्फिडेंशियल, बट वेरी बिग कंपनी, तो हजारों करोड़ की कंपनी। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा मैडम उन्होंने पहली बार 30 स्टूडेंट्स IIT से हायर किए, 6 महीने भी नहीं हुए। हाउ डू यू वांट अदर्स टू परसीव यू एज, ये सारी चीजें बड़ी लिंक है, हर नुआंस को समझना, कोशिश करना उसको अपने लिए इंटरप्रेट करना। मैं गई भाई अपनी टीम लेके, फिर हमने क्या किया, मेरा जो है 7 स्टेप मॉडल है विच आई यूज फॉर, वो IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं और हमारा उनकी स्टडीज हैं कुछ लीडरशिप प्रोफाइलिंग पे, और मेरा 7 स्टेप मॉडल है, हम उसको यूज करके कंसल्टिंग करते हैं। तो पहले लेवल पे नीड असेसमेंट करते हैं। अब नीड असेसमेंट हो गई, बैठ जाओ भाई आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, लोग समझते हैं कुछ फॉर्मा भरा लिया, हो गया भाई नीड असेसमेंट, कुछ उसका सर्वे का कुछ रिजल्ट्स आ गए, है ना, होता है ना ऐसे। बट इससे बेटा नर्व नहीं पता चलता, इससे जो इंसान रियली अंदर में क्या सोच रहा है, उसको कहाँ, what are the cause and effects of certain outcomes which are not so great for the organization. For example, in this case, 15 people leaving in 30 days out of 30, or less than 6 months out of 30 is the outcome. Are you understanding? Is the outcome. Now, what are the causes which are leading to such effect and what are the effects? Cause and effect relationship establish करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हमको नीड असेसमेंट में बहुत डीप में जाना है। So I use a very simple technique. I use 1-to-1 sessions, right from top to bottom. तो टॉप मैनेजमेंट का पहले करूँगी, वो MD CEO से बात करूँगी, फिर उनके टीम लीडर्स हैं, HODs हैं, फिर एम्प्लॉयज। It is time consuming, but it actually helps us to feel the nerve of the organization and what correctives can be put in place. छोटे में मैं बताती हूँ, आप शॉर्ट करके, तो उसमें जो रिजल्ट निकला, अच्छा, you are accredited A by NAC, that's good. So the result was, I found that when they were recruited, उनको ये बताया गया कि एक सर्टेन अमाउंट उनकी CTC है, मान लीजिए 20 लाख 25 लाख जो भी CTC, और जब उनको उसमें भाई PF कटेगा, ये कटेगा, जो भी कटेगा, वो तो उनको पता है, वो तो दिख रहा है। अब उन्होंने क्या किया, उनको जब सैलरी मिली तो वो सब कट के 20% कम, तो बोले सब बच्चे आपस में बात कर रहे हो, नए ग्रेजुएट्स आपके जैसे, पर वो MTechs थे सारे IITs के, तो थोड़े सीनियर थे आपसे, मतलब एज में, यही मतलब, और कुछ मतलब नहीं। तो अब सब आपस में बात कर रहे हैं, कॉरिडोर में डिस्कस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों भाई तुम्हारी भी कम है, हाँ हमारी भी कम है भाई 20%। तो जब मैंने इसमें हम लोगों ने जब तो पता ये चला कि द कंपनी had a loyalty bonus. आप कैसे बैठे हैं आज? यहाँ सोफे पे। But thank you for being empathetic to others. Clap for him.
देखो डिफरेंस देखा तुमने बॉडी लैंग्वेज लीकेज कितनी बढ़िया केस स्टडी थी. सो एवरी मोमेंट वी लर्न. केस स्टडी ये थी कि वो ऐसे बैठे तो मुझे लगा ये तो बड़े आराम से बैठे, पर बेचारे दूसरों के he was empathetic to others. See, so you know, you have to be very careful what kind of body language in what situation you are sending out. What is the goal and what is the communication. हर समय सोचना चाहिए. जहाँ पे भी हो, मम्मी पापा के साथ हो तो अलग गोल है वहाँ पे. प्यार का गोल है, अपनी दुलार दिखाने का गोल है, कभी कभी रूठने का भी गोल है. कम्युनिकेशन कैसा? अगर दुलार दिखाना है वो इतना करते हैं हमारे लिए तो हमें प्यार भी. तो माँ ने पूरे दिन खाना बनाया, जल्दी जाकर कुछ चिकन के माँ थैंक यू. वाओ, व्हाट अ कम्युनिकेशन. Are you with me? Have we done that? We've forgotten to do that. How many of you do that? I love you. Wow. Great. Please do that. ये छोटी-छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं लाइफ. अब कोरोना ने तो हमको सिखा दिया कुछ नहीं है लाइफ में, सिर्फ यही छोटे-छोटे यही पल है बस. आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही पल है ना. ठीक है. So best live in this, but give your best. You know what is best? Be a better version of yourself each time, every moment. A better version of me. What is that goal I have now? And what is that communication? ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा for setting a better version of yourself. तो वो पता चला कि जो 20% काट रहे थे वो लॉयल्टी बोनस, जो लोग रुकेंगे बाद में 3 साल, फिर वो उसमें क्यों देंगे पूरा पैसा और क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट भी देंगे. बट वेयर वाज द प्रॉब्लम? वेयर वाज द प्रॉब्लम? द गोल वाज राइट कि उनको रिटेन करना है, बट द कम्युनिकेशन एंड दैट क्रिएट्स द कल्चर of an individual, of a team and an organization. So it's very important to keep this in mind, because आप कल को entry level पे जाओगे, लेकिन परसों टीम लीडर भी बनोगे, फिर HOD भी बनोगे, फिर CEO भी बनोगे ना? हाँ. Where is your conviction? Yes, I can. तो मेरे साथ जो काम करते हैं ना, सच्ची कह रही हूँ मैं, IIT, IIMs के और XLRI वगैरह के इंटर्न्स, उनको फर्स्ट डे फर्स्ट कंपनी हाईएस्ट पे पैकेज. एक्चुअली you know this is how we should train our students. We should try to make them into CEOs right from day one. I am not looking for interns. Sorry मैम, गलत मैसेज अगर जा रहा है तो sorry, but if you want to apply, please apply. I would love to train good minds who are really intent to learn. Definitely, in my incubation center also and in my अपनी own company consulting also. Okay, तो अब हम कहाँ थे? हमें ये आपको ये समझ में आ गया that communication was rigged. The communication which was going out to these new joinees, they were left in the dark. So therefore, the outcomes वो कर क्या रहे हैं? वो कर रहे हैं इसलिए कि रिटेन हो जाए, और वो तो और भी ज़्यादा भाग गए. असल में ना, so it misfired, it backfired. So therefore, I think I would congratulate the teachers and the professors here for giving this topic. This is a wonderful topic, because this actually relates to your grooming of yourself. No? Okay, any questions? पूछो. Questions पूछा तो इसका मतलब है सुना. Yes. Introduce yourself and please ask. Myself, Prof. Actually, I don't have a question, but I have a point of view which I want to share with everyone. Like, ma'am, I don't want to enter the corporate world. Good. Basically, my goal is to be an entrepreneur. Oh wow. And in my early phase, I want to work as an internship with different companies, but I don't want to join everyone like in the corporate world. Absolutely. Very good. I'm very happy because आजकल तो हमारा जो country का environment है. What is your name? I'm Pranav. प्रणव बहुत बढ़िया बेटा. और anything you want to ask? Anything else? But we should not train everyone to be like CEO, HODs and all. We should always be ambitious. Sorry. मेरा वो objective नहीं था, but क्योंकि मुझे खुद
while working in a multinational, मैं IIT मद्रास में थी, तो I was heading the incubator, working with startups, mentoring their CEOs, guiding them for strategy, strategic direction, business perspective, बड़ा मजा आ रहा था. And suddenly, Dr. AG offered me a head of training Northeast. और फिर AIG कल्चर और टाटा कल्चर बहुत अच्छा है, बट AIG मिक्स होके वो खिचड़ी बन गई. And it became so suffocating. Pranav, for you only I am telling this my case study. It became so suffocating. मैंने कसम खाली में कभी भी किसी MNC कॉर्पोरेट में काम नहीं किया. And that is when I started. दिल्ली आके मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी. उसके बाद लिंक्डइन पे पढ़ लेना, मिल जाएगा बहुत सारा, थोड़ा अगर तुम्हें कुछ जानना है ना. तो बात बिल्कुल सही कह रहे हो मैडम, और तुम इसलिए और भी सही कह रहे हो क्योंकि आज का जो एनवायरनमेंट है कंट्री का, what is the ecosystem like today? It is a very enabling ecosystem for startups. Very enabling. मतलब I have two sons. One is IIT Madras से BTech, the other is IIT Bombay से BTech. और first day first company, highest pay packet for the younger one, 9 pointer. Elder one, मतलब वो जॉब उन्होंने IIT बॉम्बे में नहीं देनी थी, लेकिन उसको बुला के कि okay, just for you we are opening this position here, otherwise this position was not for you. And they gave him that position in Japan in Procter & Gamble, what he wanted. So I'm not boasting, but what I am saying is, after all that, इतने बड़े pay packets करके और इतनी सारी छोड़ के startups कर रहे हैं. तो startup क्यों कर रहे हैं? क्योंकि it is, आपको ज़्यादा अच्छा पता है कि इतनी flexibility, आप अपने ideas, you can see them actually being activated, being fructified, isn't it? So, but बहुत challenges हैं, challenges बहुत आते हैं, तो corporate life में भी आते हैं, है ना प्रणव? और तो challenges तो दोनों, और learner हैं हम अगर, और हमने अगर change को opportunity की तरह देखना है, तो my goal and my communication will be. Do you agree? Excellent question, and not question but observation. Thank you. And so I run an incubator. You can connect with me anytime if you want any guidance. Your college will also have an incubator maybe, but if you want any guidance, I am there. अगर कॉलेज से जो मिल रहा है वो तो कॉलेज से ही लीजिए, बट बाहर से भी हम गाइडेंस लेते हैं, तो if you want then I can help. Yes. और any other question? बोलिए questions पूछिए. Ma'am, how do we be confident in situations where people judge you even before you show your capabilities? Yeah. Like for example, I'm very conscious about my height and the way I look. So in my subconscious mind, it's always like, what will others think? They might judge me before even I get up there and say something. So how do we overcome those things? क्या करना चाहिए? आप क्या करते हो? बताओ क्या करना चाहिए उनको? Yes? क्रिएट, देखो दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो. अपने जितने भी खामियां हैं उन्हें, तो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास 10, 20, 30 सॉल्यूशंस आते हैं, क्योंकि एवरीबडी थिंक्स and perceives that situation and that problem in a different way. So you get so many alternatives to work on, and then we apply Delphi, and then we have those iterations. So take out the best possible, practical, feasible solution. Wonderful. Jasleen, you got your answer? Yes. You are such a beautiful human being. You are such a great smiler. You are such a wonderful person. जया बहादुरी, उसको देखो, क्या iconic. You are iconic. I am. 5 koshas. Work on your 5 koshas. Right? Thank you. Question? Why no? Very grumpy no. सोचो. पूछो. इतने सारे बच्चे हो, 2 ही क्वेश्चन है. वो कहाँ गया हमारा, क्या नाम था उसका?
मैम को बोला है कि पॉजिटिव एक्शन, नॉट other anything else. You should be accoladed for this feedback. I accolade you for this feedback. Any question? Any observation? कुछ और जानना चाहते हैं तो बताइए, बिकॉज बात तो हम पूरे दिन कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा. So much to share with you. I had brought a lot of my case studies to share with you. मैं नीम स्कूल का बता देती हूँ आपको. आप नीम स्कूल गूगल करेंगे तो आपको मेरे बारे में थोड़ा सा और शायद. नीम स्कूल जो है वो मेरा, आई एम द पायनियर ऑफ नीम स्कूल्स इन इंडिया, फाउंडर ऑफ नीम स्कूल्स. नीम स्कूल वो हैं जो कि नीम के पेड़ के नीचे हम स्लम में करते हैं. स्लम के बीच में नीम के पेड़ के नीचे वैल्यू एजुकेशन के स्कूल है वो. टू make those 3 to 15-year-old children living in slums into universally conscious citizens who respect all and are respected by all. जब कोई भी बच्चा सबकी रिस्पेक्ट करेगा तो आप करोगे ना उसकी रिस्पेक्ट. जो आपकी रिस्पेक्ट करता है आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो ना. कोई बूमरैंग थ्योरी है ना. अब उसकी जब आप रिस्पेक्ट करोगे तो आप उसको मेन स्ट्रीम में ले आए ना. तो इससे बड़ी इंक्लूजन स्ट्रैटेजी नहीं है. तो डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की जो हम बात करते हैं, तो 2021 में पावर टू फ्लाई एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी संस्था है, विमेन ऑर्गेनाइजेशन, विच इज लेड बाय, फाउंडेड बाय एग्जीक्यूटिव एडिटर्स ऑफ वॉशिंगटन पोस्ट, एंड इट हैज मेंबर्स लाइक ओपरा विनफ्री एंड ऑल, एंड द प्रेसिडेंट्स वाइफ, दे आर द मेंबर्स. So they first time in 2021 they wanted to honor 6 people across the world for diversity and inclusion. I was one of them. I cannot. But why am I telling you this? See, because my goal was not that. That was not my goal. What was my goal? Because जब मैं उन बच्चों की आंखों में देखती हूँ और फिर वही बच्चे निर्भय का कांड करते हैं, then I really bleed somewhere from my heart. Do you really bleed for such when such incidents happen? अभी तो वो बहुत गंदा केस हो तो मैं मतलब I just shut off the TV, I can't watch. So psyche इतनी गंदी हो गई. तो मेरा गोल क्या था कि मैं उन बच्चों की pretend their innocence and give them a goal. क्योंकि उनके भी तो एस्पिरेशंस है ना, वो भी तो बच्चे ही है ना, like you. और 3 से 15 साल की जो उम्र होती है वो बहुत फॉर्मेटिव होती है. प्लास्टिक माइंड होते हैं इतने फास्ट. अब जो बच्चे जब हम स्लम में जाते हैं, मेरे साथ बहुत बच्चे काम करते हैं. IIT दिल्ली ये रेगुलर ये प्रोजेक्ट्स कर रहा है, मेरे नीम स्कूल. IIT बॉम्बे रेगुलर कर रहा है सालों से. DU के बहुत कॉलेजेस कर रहे हैं. आप चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पे भी आपके लिए हम आई कैन डू इट, यू नो, मैं आपको ऑनलाइन ट्रेन करके एंड यू कैन स्टार्ट. तो ये बच्चे 3 से 15 साल के बच्चे 2-2 हफ्ते में, और जब हम जाते हैं ना तो पता सीरियसली, ये नोएडा में जहाँ मैं रहती हूँ, जेपी ग्रीन्स का जो छोटा सा मेरा फ्लैट है, उसमें जो मजदूरों के बच्चे, कुछ बच्चे दारू पी रहे होते हैं, जबकि वो मजदूरों के बच्चे, और मजदूरों जो है ना वो हार्ड वर्क करते हैं, तो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे हैव लॉट ऑफ वैल्यूज, बिलीव मी. बट वो एनवायरनमेंट जो होता है ना, उसमें वो जुआ खेल रहे होते हैं, उसमें दारू पी रहे होते हैं. फिर जब पैसे नहीं होंगे दारू के, मिलेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे. जुए खेलने के लिए जब हार जाएंगे फिर क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, चोरी करेंगे. And very easily they get into sexual abuse. Very easily. वो slip कुछ है ही नहीं, वो मट्टी है, वो जैसे पैर ऐसे गया नीचे बस. तो ये जो नीम स्कूल है हमारा, इसमें हम बच्चों को through dance, through music, through storytelling, values, और हम ऐसे नहीं बताते ये मत करो ये करो, हम उनको स्टोरीज बताते हैं और फिर हम उनसे पूछते हैं, आई हैव अ 7-step प्रोसीजर टू मेक देम इनटू वैल्यू मल्टीप्लायर्स.
सो जो मेरे साथ स्टूडेंट आपके जैसे बच्चे काम करते हैं, बहुत वॉलंटियर्स काम करते हैं, उनको मैं वैल्यू इनिशिएटर कहती हूँ, क्योंकि आप उनको इनिशिएट करते हो वैल्यूज को, है ना। और हम क्या करते हैं, हम उनको स्टोरी सुनाते हैं, सिंपल। फिर कहते हैं अच्छा बताओ क्या थी स्टोरी, फिर बच्चे बताते हैं, फिर अच्छा पूछते हैं क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, अब तुम क्या करोगे, हम ये करेंगे। मारा ना आपने, वहीं क्या तोड़ा, where the iron is hot, आपने बोला अब आप क्या करोगे, वो बताते हैं। अच्छा अब घर जाके किसको किसको बताओगे, मम्मी को, पापा को, चाचा को, चाची। हमने मान लीजिए वो शेर वाली कहानी सुनाई जिसमें वो लड़का शेर आया है, क्या करोगे, झूठ नहीं बोलेंगे, क्या करोगे, सबकी हेल्प करेंगे। पता ये किसी ने नहीं कहा बड़े ने, क्योंकि उसको लगा ना तुम आए नहीं थर्ड टाइम, हेल्प करेंगे सबकी। अमेजिंग, मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं जब मैं बात करती हूँ। It's me, it's actually this is my goal. What is my goal? I see in those innocent eyes. आप समझ रहे हो? सॉरी मैं बैठ गई पीछे वालों को दिख नहीं रहा, सॉरी। बट अब खत्म कर रहे हैं 5 मिनट। You are getting restless, right? पहले ही बोल देते हैं, पहले ही खत्म कर देते हैं। तो अब क्या, तुम तो हफ्ते में मैडम, अब मैं ना दारू नहीं पीता, मेरा भाई ना मुझे मारता है, फिर भी नहीं पीता। अब मैं गोली नहीं खेलता, माँ जो पैसे देती है उससे मैं खाना खा लेता हूँ। It's so amazing, I can't. ये ताली में तो आशीर्वाद बनता है ऐसे कि बस गोल एंड कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच। Be seated everyone. देखो मेरा नंबर, मेरा मेल आई, मेरे को ढूंढ लो तुम लिंक्डइन पे, प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि निगम। अभी तो मैंने उसमें मेरी वाला डाला हुआ है, CEO मेरी स्टार्टअप हब, और WhiteSwan भी है। तो WhiteSwan डॉक्टर अंजलि निगम WhiteSwan डालोगे तो भी आ जाएगा, है ना। उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मैंने नंबर भी डाला है, मेल ID भी है। राइट टू मी एंड आई वांट यू, मैं तुम्हें अभी नंबर दे दूँ तो कोई मजा नहीं है ना। आई वांट यू टू वर्क फॉर इट इफ यू आर रियली सीरियस। आई वुड लव टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू। थैंक यू। I feel like you are working for a very good cause, and being a student of JIPS, we feel like everything present here will help you in expanding this NEEM schools. Actually, I have a doubt that you yourself teach in these NEEM schools, or do you have teachers for them? Very good question, beta. Wonderful question. Thank you so much. Now we have volunteers from all colleges. ठीक है, even IIT की ये सब कर रहे हैं, आपके DU के बहुत colleges कर रहे हैं। अब वो क्या होता है कि आप हर साल मैं उनको कहती हूँ कि तुम बोले, मैंने कहा MOU करते हैं मेरे साथ वो लोग, है ना। तो मैं कहती हूँ MOU में स्टार्ट डेट तो डालूंगी, एंड डेट नहीं डालूंगी। एंड डेट इसलिए नहीं डालती हूँ, मैंने कहा ये तो एक कंटिन्यूएशन, टिल द टाइम वी अर्थ इज देयर वी शुड कंटिन्यू दिस, राइट। सो आपके जो नए बच्चे आते हैं वो उन प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उनको मैं ट्रेन करती हूँ ऑनलाइन, फिर वो जाके काम करते हैं, तो ऐसे चलता रहता है। नाउ वॉलंटियर मॉडल में सस्टेनेंस थोड़ी लो हो जाती है, क्योंकि आपके एग्जाम्स होते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपका मन तो है, आप करते भी हो, लेकिन पूरा टाइम आपका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में I try to keep some paid teachers from my pocket also. But we can do it on weekends also. Yes, they do it. All IITians do it on weekends. You can do it on weekends. All students from DU also do it on weekends. So, but उसमें तुम्हारे जब कॉलेज का एग्जाम है और ये है, वो तुम्हें खुद ही वर्कआउट करना पड़ेगा। And those small children they also understand कि भैया का एग्जाम है, वो तो पता है क्या होता है। वो मेट्रो, हमारे ये स्टूडेंट मेट्रो से जाते थे, तो मेट्रो पे आके खड़े हो जाते हैं। आप पाइड पाइपर सुना है ना, पाइड पाइपर वाली स्टोरी, आप पाइड पाइपर हो जाते हो। सारे बच्चे इतने खुश, मतलब यू विल नॉट, ये इससे बड़ी आनंदमय कोश की फिनिश जो है ना,
बहुत ही, it's so sad. And what's the procedure for joining if I want to be a Just write to me, we can start. We can start for you because देखो ऐसा है ना, ये हम लोग उस एरिया में, हम आपसे कहेंगे आप अपने आसपास में ऐसे एरियाज देखो जहाँ पे अंडर प्रिविलेज ज़्यादा बच्चे, ठीक है? You can start from your colony also where you live because सारे देखो हर बच्चा, इनफैक्ट मुझे किसी टीचर ने कहा जब मुझे ये बॉम्बे में, अब वो छोड़ो वो सब, बट किसी टीचर ने मुझे कहा मैडम आपको पता है आप क्यों सिर्फ मुस्लिम के बच्चों के लिए करते हैं? अब जो अच्छे घरों के बच्चे हैं उसके बैग में कौन सीडी मिला, 5वीं क्लास का बच्चा। तो मैंने कहा वो जो है ना बच्चा जो स्लम में, उसके कई वो जो उनके पेरेंट्स भी बहुत हार्ड वर्किंग वैल्यू बेस्ड होते हैं, अ लॉट ऑफ देम, बट उनके जो पेट का जो वो होता है ना, दे फाइटिंग इट आउट फॉर एवरी मिनट एग्जिस्टेंस, दैट डजंट गिव देम दैट बैंडविड्थ टू सिट विद देयर चिल्ड्रन एंड यू नो, सो व्हाई कांट वी डू इट? और हम इसलिए आपको ये कहेंगे कि आप अपने साथ जहाँ पे आप करना चाहते हो तो आप एरिया ढूंढो, हमें बताओ, यू आइडेंटिफाई उसकी हर चीज़ की एक सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल। मैं आपको बताऊंगी कैसे उनके पेरेंट्स को हमें बात करना होता है जाके, क्योंकि यू हैव टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस। That building of trust is very important before this, you know, and these schools are all alternate schools. These are informal alternate schools. So we'll help you. I'll guide you. काम किसको करना है? I must. I'll be there. Yes. Not every student will volunteer it for themselves. We should give some incentives to the students, like by giving them meals and everything, so that they volunteer themselves to join the. I don't believe in those tidbits. क्या उनको meals नहीं मिलते हैं? मैं कभी भी वो जो बच्चे आते हैं ना, उनको भी मैं सरप्राइज पार्टी करा देती हूँ, लेकिन मैं रोज उनको खाने के लिए नहीं देती हूँ कि वो खाने के लिए आएंगे मेरे पास। No, I don't want such children and I don't want such volunteers. Are you agreeing what I'm saying? Thank you, Pranav. Good. बोलिए मैम, बोलिए। Good morning, ma'am. Myself Tamana Goyal. Ma'am, my question is that you have talked about confidence. So, what is the best way to develop it? यार ये तो पूरा रामायण हो गई, पूरी रामायण नहीं हो गई? अब सीता कौन था? अब ऐसा मैं आपको आपका नाम बेटा अर्पणा? Tamana Goyal. तमन्ना ऐसा है, जसलीन, आपके फ्रेंड्स कौन है ग्रुप में? वो प्रणव है ना? ये सारे लोग बैठ के डिस्कशन करना, ग्रुप डिस्कशन। Try to identify what all we have covered and what is that leading to? Because as you rightly said, confidence is an outcome. आपने बिल्कुल सही बोला। Confidence is an outcome. तो मैं क्या करूँ? What is that value system? What is that the communication which I need to work on, right? ये डिस्कस करके निकालो। I will be there. LinkedIn पे मेरा नंबर भी पड़ा है। पूरा सेशन फिर से तो नहीं कर सकते। Thank you. Did I give the answer right? Okay. Thank you. Any other question? Thank you so much. God bless you. God be with you. Accepting our invitation and for being with us today. Your thoughts have truly inspired us and enriched us with the in-depth knowledge on how effective communication skills can enhance our personality. I thank our director sir, Professor P.M. Chori sir, for always supporting and guiding us. I'd also like to thank management and our honorable Vice Chairman sir, Sri Anuraj sir, for his guidance and support in each and every event held at this. All the participants are requested to fill the given feedback form given online. Thank you so much everyone. Have a nice day.
मैडम को Now I request Director Sir to please brief ma'am. Gracias.